स्टार्ट करा ऑफ हे गीतला नहीं सॉरी दिस इज कोरो बेरा सेमती करा हजी तो मने होनी सेटिंग दा ये के रही जाउ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग ओके देखो आई नो टॉपिक स्टार्ट करिया प्रॉफिट एंड लॉस and like the percentage this is also very important chapter and all the games is of the ratio and proportion प्रत्येक arithmetic chapter रे ratio दा इजली पूरा chapter को dominate करी रखी in most of the chapters percentage रो हमें जेमती concept सब लगेई थिले but sorry ratio लगी whatever may be the concept जेमती हम line method पढ़िले successive पढ़िले हमें beginning रे merging भी पढ़ी जे जेमती एतकी परसेंट मोर एतकी परसेंट लेस देसले एट दैट टाइम एक्चुअली हम केमती रेशियो बाहर कोला पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐड करी के लिखुतले द ऑल द कांसेप्ट्स ऑल जहां भी हमें कांसेप्ट पढ़ी दिले एंड ताको हमें क्वेश्चन सेंस बुझी की डायरेक्टली खाली अप्लाई करबा कथा प्रोफाइल से किछि भी डिफिकल्टी नै इंपोर्टेंट ने केवल हला हमें क्वेश्चन को बुझी पारिबा कथा डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर देयर एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर्स एक्चुअली वी विल बी acquainted with that terms actually and after that it will be very easy for us. So let's start. Percentage समस्तों को इजी लागिला ना percentage? Yes sir. सर Okay sir. Okay. Now we'll see profit loss will be more easier than that. हम यदि percentage clear हेले and केवल एटा नहीं छिला हमको exactly जो सेम जिंस ही हेबार अछि हमको रेशियो जते भिडियो लागुतला जे परसेंटेज सेतकी भिडियो लागिबो देन वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग हमें ताहले आको एक्चुअली बढ़ोन बिकॉज़ फर्स्ट चैप्टर जते डिफिकल्ट है हमें देले एक्वाइंटेड हे गेलनी चैप्टर से बिकॉज़ इज एंड एवरी चैप्टर आर लिंक विद द चैन प्रत्येक चैप्टर एक्चुअली काहे ना काहे एक्चुअली लिंक एक्चुअली अछि तो हम फर्स्ट चैप्टर डिफिकल्ट हैला पर 7th 8th चैप्टर डिफिकल्ट फील करिए दैट मींस वी आर नॉट क्लियर अबाउट द प्रीवियस चैप्टर भाई हम परसेंटेज यदि हमको इजी लागी जी यू कैन फील दैट द होल ब्लॉक percentage profit loss SI say this is one block or one part of the arithmetic हमें ए सेक्शन रे हमको जमा भी डिफिकल्टी लागिवानी profit and loss there are different terminology profit loss and discount about discount term को हमें के लिए अवॉइड करबा you will discuss about profit and loss only profit केते बेले हम everybody know what is CP and the what is SP CP stands for the cost price. Cost price. Yeah. Selling price. Yeah, SP Price. stands for the selling price. And the profit is SP minus CP. सेतेबेले की हबो जेदर SP टा बड़ा हबो. Otherwise you will get some loss. It will be CP minus SP. एबे देखिबा. जो percentage profit and percentage loss एक्जाक्टली पूरा परसेंटेज हम इनती लगौथिले गोटे संख्या रे 10 अछि आ गोटे संख्या रे 12 अछि मु तुमको जदी पचारे जे 12 टा 10 रु केते अधिक देन यू विल से दिस विल बी 2 हैव देन यू विल से 2 by 10 into 100 this is nothing but 20% we are telling like this in the same way गोटे आर्टिकल को हमें ₹10 रे किनिले ₹12 रे बिकिले दैट मींस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2 किंबा हम यदि 10 रे किनी की हम यदि 8 रे यदि बिकले देयर इज अ लॉस ऑफ 2 बट द परसेंटेज प्रॉफिट हो कि परसेंटेज लॉस हो कहा ऊपर हमें लगेबा ताले 10 ऊपर लगेबा जेमि हम 10 रु 12 टा केते अधिक ना 2 अधिक कहा टू 2 अधिक 10 रु हम 2 by 10 नु जे बेस को जितले हम 8 रे बिकु जे हमर 2 टंगा लॉस हो जे हम कहा ऊपर 2 को लगु ना 10 ऊपर सो एग्जैक्टली जदी हमें देखिबा पूरा सेम वे रे हमें प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमें same calculation करिया just language is different but the calculation behind that is always the equal like the percentage so 10 टंका रे किनी जदी 8 टंका रे बेकिली ताहले I that there will be a loss of 2 10 रे किनी जदी मु 12 रे बेकिबी then there is a gain of 2 एबे तमे देखो एरा ठीक अछि जदी मते क्वेश्चन रे पचारे गोटे आर्टिकल को मु 10 रे किनिली तापरे मु तापरे 2 टंका गुडे खर्च कली it may be the traveling cost it may be the repairing cost some other expenses I have incurred on that and the total amount will be now and I sold that article at 15
जदि वर्तमान मु प्रॉफिट किमा लॉस जदि हिसाब जदि करे, if now I start profit, if I now I want to calculate the profit and loss, ताले कहा ऊपर ताले हवा 12 करो yeah, that's actually good. We have to be clear about that. Very good. हमें ताले कि 12 ऊपर लगेबा ना कि हमें 10 ऊपर। मु एठी गोटे इंस खाली कहबा पई चाहू जे बहु जन को माइंड एक्चुअली कोन था कि प्रॉफिट लॉस ता सब कॉस्ट प्राइस ऊपर लागे, बाकी गोटे इंस मन रखि तो जदि अदर एक्सपेंसेस किछि भी हमें जदि सेथरे देइनी ताहले हमें सीपी ऊपर लगेबा, जदि किछि भी एक्सपेंसेस हमको ऐड हे गला, इट मे बी ट्रैवलिंग कॉस्ट, मे बी रिपेयरिंग कॉस्ट, व्हाटएवर मे बी, इन सम टाइम मे बी एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हम क्वेश्चन को आसले जानि परिबा, तो सेई टाइम रे टिके हमें खाली ध्यान देथौ जे ताको हमें ऐड कोला परे जहा हबो ता ऊपर कि हमें जहा भी प्रॉफिट किमा लॉस हमें लगेबा, तो न बुझी कि हमें एक्चुअली घोषा मारिबानी जे हमें सबले सीपी ऊपर लगेबा, हम किछि भी कंडीशन नै। Again, 8 ଆଉ 10 ଭିତରେ comparison କରିବା ପାଇଁ I know do I that means there is no need to find the exact value 8 and 10. I need just the ratio, that is the 4:5. In the same way, when we are calculating the profit and loss, my final target is the ratio of the CP and the SP. Once I find the ratio of the CP and SP, whether I know the exact value of the cost price and the exact value of the selling price, it doesn't matter. The profit and loss will depend on only the ratio. एति हमें केवल माइंड रखिबार अछि। But sometimes what happens in the questions, actually it is given that you have to calculate the percentage profit or loss, profit or percentage loss on selling price. Sometimes in some cases the question directly mention थाए, जदि क्वेश्चन रे मेंशन नाही, क्वेश्चन जदि पचारि छि जे डायरेक्ट प्रॉफिट किमा लॉस बाहर कर, सॉरी percentage profit किंबा percentage loss बाहर करो, then we will calculate on the CP. But जदि क्वेश्चन से देई छि, then what will be the percentage profit or loss नहीं देखि लेखो, if the percentage profit or loss on the selling price ऊपर जदि मते पचरा जे ताहले हमें से टाइम रे जदि कोन करिया था ना एसपी ऊपर लगेबा। सेम केस जदि हमें रेशियो को जीवा, ठीक है, हमें आपको बढ़िबा जदि गोटे जगह रे मन करा जो 10% प्रॉफिट देला, 10% ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू हम जानि जे दिस इज 1/10, तो मते देडी पचरा जे एसपी बाय सीपी केते स्ट्रक्चर हम लिखि पारे, एसपी बाय सीपी केते है, 10 so by this, yeah, 10 will be the cost price, yeah, so Cost 1 will price. be Cost price. this will be 11 but 11 I can also write like this, हमको सब फॉर्मेट आसीबार अछि, जदि मते को जगह रे सीपी बाय एसपी मु एमती दे लिखिया पे इच्छा है, then I can write also 10/11. I can write also जेतु 10% प्रॉफिट है जे सेलिंग प्राइस ता कॉस्ट प्राइस 11/10, जो जगह रे मते जो स्ट्रक्चर दरकार मु सेटा लिखि। इन द सेम वे मते मन को 20% लॉस दे जी, 20% ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू हमें जानि जे केते 1/5, 4/5. then I can write down SP by CP may be written as 4/5, तो loss दे, 4/5. yeah, this CP by SP I can written as CPSP, this can be written as 10:4. yeah, or I can written as, I can write SP equal to CP into 4. Whatever may be the structure, everything is correct, right? And the one more thing is that जेते बेला क्वेश्चन मेंशन करि देला, क्वेश्चन मते मन कर मेंशन कर दे जी जे 10% profit on SP, again the 10% is 1/10, but now the important thing is that 10% on the selling price, माने selling price ता 10 हेबो आ प्रॉफिट ता केते हेबो, ता माने 1 हेबो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, selling price ता ता माने बेस हेबो, because 10% profit on the selling price, that means I have to calculate 10% of the SP, जेमति मु एग्जांपल नै परिबी जे SP रा 10% माने मु 100 रा जदी बिकिबी मोर 10 ता माने प्रॉफिट हेबो, तो तुम निजे बे को 10 जदी प्रॉफिट हला ताहले 100 रे बिकिले ता माने मु किनी थिली केते रे 90 90. yeah, that is important.
So here the same thing will happen actually 1 by 10 jodi hela, that means we are selling at 10, and that's why we are gaining 1, that means we have purchased it at 9. जदि मते को जगह 10% loss on SP जदि दिए, again this 10% equal to 1 by 10, but what will be SP is to CP. मते 10 रे जदि बिकिबी मोर ताने टंकाटे लॉस हेबो, that will be बुझियला. Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन यदि मेंशन है नहीं जे खाली प्रॉफिट लॉस जदि मते कैलकुलेट करिया पे कहि जे ताल त हम डायरेक्ट सीपी ऊपर लगेबा. जदि देखिबा हम क्वेश्चन बहुत जारे मेंशन हेते, जदि क्वेश्चन यदि मेंशन हे जाई जे ताहले हमको ये ध्यान रखिया को पड़िबो, बेस्ट ता माने सेलिंग प्राइस हे जाऊ. क्लियर समस्त को? नाउ वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन. A man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? Very simple. And another thing is I want to say that I am sohe bhi nahi ki kete bale kemti kariba, because sometimes the 100 become the more convenient way to solve. जेमती परसेंटेज रे करथले एग्जैक्ट सेमती को जगह रे 100 नउथले को जगह रे फ्रैक्शन नउथले, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट हम एग्जैक्ट सेम जगह सेमती ही अप्लाई करबा, को जगह रे 100 नेबा को जगह रे फ्रैक्शन को यूज करबा. A man buys a cycle for 1400, sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? That means this is the 100%. If I suffer a loss of 15%, that means SP will be 85%. Yes. Yes, sir. So I can write down here directly 1400 divided by 100 into 85. Agree everybody? That's नहीं, not big. yeah, so this will cancel out. 14 into 85 केमती करिया? Very simple. 14 टा 100 12 1120, 14 50 70. This will be 1190. Answer. We can move to the next one. By selling a car for rupees 6400, Mr. Rao lost 20%. 6400 टंका रे बिकी की जने 20% लॉस हे गला. Then the cost price of the car is केते? 6400. एते 20% लॉस है कि त माने जे केते परसेंट? 80%. 80. Yeah, divided by 80. Question मध्ये cost price मागी जी. I can do it 100. So this is 8000. स्मरणिका अच्छो कि नहीं क्लास रे? Yes, sir. We'll go move for the next question. A retailer buys a radio. A retailer buys a radio for rupees 225. His overhead expenses are rupees 15. He sells the radio for rupees 300. The profit portion of the retailer. या छोटो क्वेश्चन से दिमे जणा पडुनी 225 प्लस 15 ले 240 हेबो, तो तापरे 300 आसीबो, तो 60 बाय 40 25% जणा पड़ी जाउची. नहले हमें कोन करिया फाइनली एसपी सीपी रहिबली रेशियो इक्वली बाहर करियो. So what will be the SP? That will be 300, but here the cost price will be how much? 225 plus 50. So this is 300 divided by 240. This will be cut. This is 5646. So what will be the gain portion? 1 by 4 into 100. This is equal to. Move to the next one. If the selling price of an article is 1 full 1 by 3 of the cost price. 1 full 1 by 3 means 4 by 3. That means the selling price and cost price ratio ta 4 by 3 he jibo. Percentage profit dale kete habo 1/3, and this 1 by 3 is in a fraction. If I want to convert it into percentage, yeah, just 33.33. yeah, 33.33 or 33 full 1 by 3. We can move to the next one.
A salesman expects a gain of 13% on his cost price. It in a month his sale was etik, then what was the profit? Please try to understand. Question କହିଛି ଗୋଟେ salesman actually 13% profit ରେ ତାମାନେ ବିକୁଛି। ଯଦି ସେଇ ମାସର ତାର ସେଲ୍ actually 7,91,000 ହେଇଥିଲା, then what was his profit? ମତେ ନିଜେ କହିଲ ଇଏ ତାହେଲେ କେତେ percent ଏଟା ହବ ଆଉ ମତେ କେତେ percent ମାଗିଛି? So 113 হবো। Yeah, very good. মানে এটা সেলিং প্রাইস দেই দেলা 113%, মতে খালি প্রফিট মাগিছি, তার মানে মতে খালি 13 actually মাগিছি। So this is equal to 791,000. This is 791,000 by 113 into 13. हिसाब बोले 7 देखो कटी जाउची 1391, so 13 into 7 91। बुझिएला समझतंगर लेखो चिंता हो जाए। Yes, sir. You can move to the next one. There are 10% loss if an article is sold at 270. Then the selling price of the article to gain 10% केते? तमे निजे को ता माने केते परसेंटेज एटा देई कि एटा 90%? 90% दे जे 10% मते गेन दरकार, ता माने मते 110% ता माने मागे 110. So 90% go 270. This will be 270 by 90 into 110. So that will be equal to 330. এটা দেখো, by selling an article for rupees 450, I lost 20%. For what price should I sell to gain 20%? कौन देला एठी पुनी 80%? 80%. Yeah, मागे जी कितने परसेंट 120. So 80% equal to 450, 120% कितने बोलेगा 450 by 80 into 100 क्योंकि 40 3 ये 40 2 गुणे या 2 2 5, this is 6 7. देखो 8 है बहुत important role actually कौन हमें जितने भी क्वेश्चन गले कौन कि माने 20% 10% ए भला दे देछि तमने तो हमको सुविधा हो जाउछि। बट एक केस रे देखो 11.11% 33.33% दे दबो ए जगह रे हमको टिके तमने बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल। हमें बे ताहले कोन करबा, वी हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ द रेशियो। रेशियो केमदी अप्लाई करबा देखो Action value नहीं। या वेरी गुड सीपी एंड द एसपी 96 देई न भी पारे, मते नॉर्मली भी अलगा किछ भी पचारी पारे। ए जो रुपी जो 96 जो मते जो देइछि ता परे लॉस केते 11.11%। 11.11 of fraction value everybody know this is 1 by 9. Yeah, and this is 1 by 3. So 1 by 9 loss ता माने 9 CPL SP केते होता माने 8 मते बाकी 1/3 बाकी प्रॉफिट दरकार तो CP 3 है SP 4 हेबा कथा। तमे मते ए दुईटा रो गोटे जिंस तमे कोह माने कोटा माने एक्चुअली समान रहिबा कथा cost price बिकॉज़ भाई मो सेम price. पेन ता ओके सेम पेन ता मु किनिले अलग अलग एक्चुअली रेट रे बिकुजी माने पेन तो गोटे ही दैट मींस पेन रो सीपी टाइल समान हेबा कथा। सो जस्ट मल्टीप्लाई हियर 3 हियर 3। सो दिस कॉस्ट प्राइस इज 9, गोटे सेलिंग प्राइस 8, गोटे सेलिंग प्राइस 12। क्वेश्चन कहूची ता माने 8 रे आगरु बिकुथला एबे ताकू 12 रे बिकिबार अछि माने 8 यूनिट को केते माने 96। 96. सो 1 यूनिट को ता माने 12 यूनिट को केते हेबो 12 into 12 equal। Let's move to the next one. Very simple, firstly concept am clear धीरे धीरे जीवा। Number 9, if the cost price is 95% of the selling price, then what is the percentage profit? Please try to understand. If the cost price is 95% of the selling price, that means if I want to take the ratio of CP to SP, cost price, yeah,
So this will be 95 and this will be 100. Because cost price ta selling price ro 95% haba kotha. That means if we take the ratio, this is 19 into 5 and this is 20 into 5. तो केते परसेंट ताले प्रॉफिट यदि पचारिबो ताले का ऊपर लागू करिबा 1/19 into 100. This is equal to 5 full 5/19%. देखो जोटा कहूतिली एबे, if there is a profit of 20% on the CP, then the profit percentage on SP is केते. यदि profit percentage on CP पचारि छी तामे मु कहिबी ये 5 ले ये केते हो ताले 6 हो. Then what will be the percent profit on the SP? 1/6 एबे ही जो. Because कहा ऊपर मते लागू करिवार जी SP ऊपर तामे बेस वैल्यू की हेबो तामे बे 6 हे जो. So 1/6 into 100. Everybody know this is 16 full 2/3% or 16.66% you can write. Let's move to the next one. देखो एटा, by selling an article a man makes a profit of 25% of the selling price. कलो देखिबा. Thirty-three point three three. 33.33. 30. 33.33. 33.33. Okay. देखो हमें भी देखिबा. By selling an article a man makes a profit of 25% of its selling price. 25% of fraction value हमें जानी जी 1/4. But now this 4 is the selling price and this is the profit. ताले ये selling price ये profit है ला. CP केते हबो 5 कर दबनी भूलले that will be 3. Yeah, because 4 रे बिकिले मोर टंका रे profit हो जी, that means I have purchased it at ₹3. So what will be percentage profit? 1/3 into 100. This is 33.33%. Next we can go to the next one. देखो, by selling a book for 150, a retailer gains 33% of the selling price. देखो एटा में नॉर्मली भी करि पारिबो बिकॉज़ सेलिंग प्राइस ता केते रे 150 रो 1/3 ता केते हो ताने 50 हे जेबो 50 माने 150 रे बिकिले से ताने 50 टका गेन करि जे ताने केते रे से ताले किनि जे 100 टका ने 100 नहीं की. So we can also directly do like this. Profit equal to 150 रो 1/3. This is equal to 50. So CP will be equal to 150 into 50 equal to 100. और हम जो फॉर्मेट यदि करिया हम चाहिबा CP by SP, this 33.33%. ताने ये जो 3 ये जो केते दाने चले सॉरी 2 है ये वो. So 3 को यदि 150 2 को दाले केते बताने 100. Move to the next one. बुझी हो जी ना क्लियर समझ Yes, Yes, sir. sir. Okay, next Yes, sir. देखिबा. A loss of 15% of the selling price is equal to a loss of what percent on the cost price. देखो 15% on the selling price. SP and CP जदि मु नै जदि ताले ये जदि 100 हेबो लॉस केते हेबो ताने 85 ई सॉरी 15 Yes, नहीं sir. कि a loss of 15% on the selling price. तो 100 रे बिकिले तमरो 15 टका लॉस हो जी ताने केते रे तम ताले किनी देला 115. So question कहबा हिसाब रे हम परसेंटेज लॉस बाहर करिया. 15 into 115 divided by 100. 5 3 23 This is equal to 300 by 23 equal to 1/23. टिके ताने कोसस रहबा कथा हो माने गड़बड़ हे गेले जे भूल हे जबा हम जदी माने 115 न करी जदी ताने 85 रे हमें ई सॉरी 15 दी काटी देले ताने गड़बड़ हे जबो कोन भाई मते दी कोन हे जे ताने लॉस होची माने सीपी ता हमते बेसी हेबा कथा. नेक्स्ट नंबर को जीवा देखो एटा
बाहर कल गरम हो जाए $135. Yes, somebody says 135. Preeti Pravagiri. Yeah, next. Okay. ଆଉ କାର ବାହାରିଲା କି? Let me solve. 158.5. 158. 8.5. Okay, देखिबा देखो. By selling an article for 102, there is a loss of 33.33% of SP. At what price should it be sold to gain 37.5% of the CP? देखो गोटे तो हला पूरा मैनुअली करिबा मु करिबी तुमको दउची सीपी गोटे टिके बाहर करिकी अच्छा 102 रे बिकिले जो फर्स्ट केस रे 33.33% माने जो 1/3 जो देइची ए तीनटा कोन फर्स्ट केस रे एसपी ताले सीपी ता माने केते टका हिजो ता माने 1 टंका देयर इज लॉस ऑफ 1 दैट मींस आई हैव परचेज इट 4. या ता माने 3 यूनिट को 102 है 1 यूनिट को ता माने 34 सो 4 यूनिट को 136 एंड दिस इज द सीपी हां हेबो तो एतकी Yes, sir. ओके सो क्वेश्चन मते बे कोन कहि छी ना केते पैसा रे बिकेले मोर 37.5% गेन हबो अच्छा 37.5% अब दे रेस्ट्रिक्शन ई लेखि जी कि कोठी एसपी ऊपर बोली लेखिनी Yeah. सो एसपी ऊपर यदि न लेखिबो Right. ताले बाय डिफॉल्ट ताले हमकु ताले सीपी ऊपर ही तामने नेबा को पड़िबो सो वर्तमान जो 37.5% मते जो गेन जो परिवार अछि देन दिस 37.5% मु काहा ऊपर ताले लगेबी ताले एसपी जदी एतकी यदि प्रॉफिट रे बाहर करिबी दिस विल बी 136 इनटू एवरीबॉडी नो दिस इज 3/8 Divide. so this will be 11/8 so this is 8 के 8 रा 17 170 and 17 187 जदि हमें मर्जिंग ऑफ रेशियो करके भी करिया इफ विल गो थ्रू द मर्जिंग ऑफ रेशियो then I can write down also CP and SP now you see 33.33% please try to understand 33.33% loss on the SP that means this is 3:4 and 37.5% gain on the CP that means this is 8:11
बट गोटे जिनस तो कांस्टेंट रहइबो सामान रो कॉस्ट प्राइस ता तो समान ही हेबो दैट मींस आई विल मल्टीप्लाई हियर टू एंड दिस विल बी 6 ताले 6 यूनिट को केते दिजी मते 102 11 यूनिट मते दरकार 102 by 6 into 11 17 छको 102 so this is 187 अरे जदि बुझी हलानी then you can बुझी हला समस्तंकर Yes, sir. ओके and I hope जो माने भूल करथले भी जानि सारी थो कोठी मिस्टेक करथि now come to number 15 a person sells an article for rupees 75 and gains as much percent as the cost price of the article in rupees a question हम बोली बुझिबा को पड़ियो question कौन actually देखो please try to understand a person sells an article for rupees 75 and gains as much percent as the cost price of the article in rupees एटा मते बुझिबार अछि जदि मते खाली कहि दे थांता जे गोटे लोक जेतेरे सामान किनुची सेतकी ही प्रॉफिट रखुची दैट इज समथिंग डिफरेंट दैट मींस गेन्स एज मच एज द कॉस्ट प्राइस एती खाली मते दे थाना एज मच एज परसेंट भी दे न थाना एज मच परसेंट दैट इज समथिंग डिफरेंट एज मच एज मु कहूची जेतेरे किनिबो जदी सेतकी रो प्रॉफिट रे बिकेबो दैट मींस द पर्सन इज सेलिंग द आर्टिकल एट 200% यस और नो और इनडायरेक्टली हमें कहि परिबा ता माने 37.5 रे से ता माने किनिची but the question is why the question is asking again about the cost price because it is asking something different कोन मागी जी देखो the gain is as much as the cost price of the article in rupees माने percentage रो profit जेते sorry percent profit आ जेते that means the percentage रो value ता जेते article रो cost price ता rupees रे सेते तामाने तमे गुडे आर्टिकल को जदी 30 टंका रे किनिलो तामाने तमे 30 टंका प्रॉफिट रखिबो नै तमे केते प्रॉफिट रखिबो 30% जदी तमे गोटे आर्टिकल को 40 टंका रे किनिलो तमे सेठी ताले 40% तामाने प्रॉफिट रखिबो जदी तमे आर्टिकल गोटे को 60 टंका रे किनिलो तमे ताले 60% तामाने प्रॉफिट रखिबो बुझियला Yes, sir. okay so in these types of questions if you go to the actual method then quadratic equation will come actually there is no shortcut to this method तामिल ऑप्शन धरि सब पुट करबा ए गोटे क्वेश्चन खाली मु ट्रेडिशनली सॉल्व करूजी देयर आर 3 क्वेश्चंस मोर इन व्हिच एक्चुअली विल सॉल्व बाय अप्लाइंग द ऑप्शन सो ट्रेडिशनली केमदी करबा लेट्स सी p इक्वल टू x दैट मींस प्रॉफिट परसेंट भी केते ही जबो ताले x ही हो सो sp टा केते ही जबो sp विल बी इक्वल टू x रो 100 plus x by 100 I think everybody understand this 10% प्रॉफिट हले केमती करबो सीपी नहीं 10% प्रॉफिट हले हम कोन करिए सीपी रो 110 by 100 या एग्जैक्ट एकटा से नहले तुम एमटी भी करि परिबो x plus x रो x% it depends on you माने सीपी plus एटा प्रॉफिट एमटी भी करिगी इक्वल टू एसपी भी करि परिबा सो इट इंप्लाई दैट एसपी रो वैल्यू केते मते देजी 75 CP रो वैल्यू x 100 plus x by 100 मल्टीप्लाई करो यदि हम राइट साइड को जीवा दिस इज x स्क्वायर plus 100x एंड यदि एपट को हम आनिबा यदि मल्टीप्लाई करिया दिस विल बी इक्वल टू गोटे काम करन हले प्लीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एटा रियली माने अल्टरनेट माने सेम जिंस ही तो हम भाबीबा हमें मल्टीप्लाई करले भी कोन हो 100x स्क्वायर plus 100x plus 7500 सेठी तो भाबीबा ना को दिटा को इनटू गले 7500 तांको भितरे डिफरेंस 100 तो हम एठो ही काई न करि देबा देखो ना एटा तो x एटा x plus 100 तांको भितरे गैप केते 100 ही हेबो आ मल्टीप्लाई ले केते हेबो 7500 भाई कहलो हमदी को दिटा नंबर अछि जो दिटा रो डिफरेंस हेबो 100 आ मल्टीप्लाई गले 7500 150 or 50. Yeah, very good. 50 and 150. So what is the value of x? That is 50. So this is the answer. हो जी देखो तुम गोटे आर्टिकल को 50 रे किनिलो 50% प्रॉफिट रखिबो 50 रो 50% केते हो 25 सो 50 रे किनि कि तुम यदि 25 यदि प्रॉफिट रखिलो सो डेफिनेटली केते हो जी तामे 75 ही जाउजी
बुझिएला समस्तଙ୍କର Yes, sir. we'll move to the next one. A shopkeeper sells an article for 107.25 if the number value of cost price in rupees is equal to the profit in percent CP of the article केते देखो हम ऑप्शन देजी कोन पाइना एटा हम ऑप्शन हमें पुट करबा सो इन दिस प्लेस द स्क्वायर प्लेज ए वेरी इंपोर्टेंट स्क्वायर गोटे आर्टिकल को 80 रे किनिलो 80% 80 रे 80% केते हबो 80 * 80/100 Yes, sir. माने स्क्वायर करी की राइट साइड रो दुईटा छाडी की ताने मु खाली डेसिमल ताने देबी सो 80 रे 80% 64 सो इथिलु 144 तो एई भली हम एई जगह रे जो अप्लाई एक्चुअली करबा 55% दिस इज इक्वल टू 30-25 दिस इज 30.25 30.25 यदि प्रॉफिट यदि हला ये 55% एटा सो दैट विल बी इक्वल टू 85.25 बाकी मते केते हेबा कथा 107.25 60 जदि नेबो 60 रो 60% दिस इज प्लस केते हेबाडा 36 सो सेलिंग प्राइस केते हेबा कथा 96 okay 96. if we take the 65 रो 65% that is equal to 42.25 42.25. It out. yeah now it becomes 107.25 so answer is that जिते टंका रे हम किनिबा हमको 70% प्रॉफिट दरकार आ 70% प्रॉफिट माने x रे x% प्रॉफिट दैट मींस x स्क्वायर बाय 100 सो वी नीड ए फ्रैक्शन वैल्यू नेक्स्ट नंबर कॉल देखिबा बी क्विक क्वेश्चन पढ़ो करो So first 34. गुड देखिबा 34 लागी 36 रे 34 नहीं 34. 34 टा 50 रे 16 कम 35. नाम होनी बोदे 35. 38 हो बोदे 38 हो अरे 34 रे केते आसु जे 34 माने 50 रु 14 कम 14 रु 196.96 काटिले तो 04 आसिलानी हेबोनी 35 रा चांस नहीं 36 रा स्क्वायर है 0.56 आसु माइनस 38 या 0.44 आसीबो 38 रे सिना आसु जे 0.44 जे काटिले 0.56 बाकी रहबो देखो मु केनी जानि देली देखली न बाहर करी मु तुम कहली ना माने हम स्क्वायर ऊपर बहुत डिपेंडेंट है तुम निजे कहूनो गोटे होल नंबर 38 हो या देखो 57 रो जदी मु 0.57 काटेबी ऑब्वियसली जे भी आसीबो डेसिमल केते आसीबो ताने 43 रे आसीबो नहीं ये दीटा मिसले सिना 100 हेबो रे मनकर को जगह रे 48 रो मनकर जेते भी हो 0.79 काटिले तो एटी जेते पॉइंट भी 79 काटो एटी पॉइंट केते आसीबो 21 आसीबो तो 1. सो सेही जिंसरा इजली दरकार दैट मींस 0.56 जदी रहिबो माने ए संख्या रो स्क्वायर रे एक्चुअली 0.44 आसीबाटा कंपलसरी हां कि नै I guess so. आ तमे निजे बेटी मने पकाओ Yes, sir. डी 100 भीतर ए सॉरी 2 डिजिट नंबर स्क्वायर हमें केमदी करूथिले 50 रु जेते कम के अधिक होइतो लास्ट तार स्क्वायर को लिखुथिले दैट इज वेरी इंपोर्टेंट तो जदी मु 34 रो स्क्वायर बाहर कली ये 50 रु एक्चुअली 16 कम माने 16 रो स्क्वायर 256 माने तार स्क्वायर जे भी आसीबो सेठी रे 0.56 तामने आसीबो 0.56 35 रो स्क्वायर जे भी आसीबो एथरे एक्चुअली 0.25 आसीबो 36 रो स्क्वायर एक्चुअली ये 100 रु केते कम दाउने 14 कम माने सॉरी 50 रु 14 कम माने एथरे 0.96 आसीबो बट एठी यदि देखिबो ताले जे 38 टा 50 रु 12 कम ताले 0.44 आसीबो तो 0.44 आसीबो माने मु एबे माइनस करले ताले 0.56 एक्चुअली पाई जेबी तो मु बाहर कर दो जेबी एग्जैक्ट वैल्यू बट दिस इज द ट्रिक एक्चुअली व्हाट आई हैव अप्लाइड एंड यू कैन चूज दैट वन दिस इज द वेरी इजी मेथड
34 ର स्क्वायर 25 ରୁ एक्चुअली 9 अधिक एतु दिस इक्वल 11.56 11.56 that is equal to केते हो ताले एरा 32.44 which is not in option ये ता माने एबे हो देखो एबे केते हो ये 1296 ये भी हे जबो so 36 ରୁ 12 न काटी we can take 13 13.04 this is not in the option 35 टा 0.25 काटिबा this is equal to 12 2.5 this is equal to again 23.75 that is not in the option and this will be equal to 38 काटी देला एटा so एटा 12 13 14 44 14 काटी देला माने केते होता ले 24 हे थांदा बाकी 15 काटिबो 23.56 एबे गोटी देखो by selling an article आउ गोटे जिंस देखो लाइन मेथड को हम एठी अप्लाई करी जानिबा बिकॉज़ ए जो आइदर ए और सी रे जो व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट यू कैन फील ना तमे निजे कोह 25 into 75 by 100 लिखिबी जा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड 75 into 25 by 100 लिखिबी एग्जैक्ट से Yes, sir. ओके सो नाउ आई कैन से 25 रो 75% जहा 75 रो भी 25% से तो एई जगह रे देखो एक्चुअली व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जदी गोटे आर्टिकल को मु जदी 10% जदी लॉस रे जदी बिकुजी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गोटे आर्टिकल को जदी मु 10% जदी लॉस रे जदी बिकुची ता माने से ता माने सॉरी माने दीटा केस एक्चुअली अराइज करिवो जेते बेले सीपी आउ परसेंटेज इक्वल हो केमिति मन कर मु 10% लॉस रे भी गोटे आर्टिकल को बिकिबी जेते 90% लॉस रे भी बिकिबी तान सेते ही हो तमे निजे कहलो गोटे आर्टिकल को जदी मु सीपी रे किनुजी ताकू जदी मु 10% जदी लॉस रे बिकिले सॉरी अलगा आंसर कहबली अलगा गला देखो गोटे आर्टिकल को मन कराई जो मु 10 रे किनले आ गोटे आर्टिकल को 90 रे किनले 10 को जदी मु 10% लॉस रे बिकिली जेते हेबो 90 को 90% लॉस रे बिकिले भी सेते हेबो ट्राई टू अंडरस्टैंड गोटे आर्टिकल सीपी 10 अछि आ गोटे आर्टिकल सीपी 90 अछि एता को भी मु 10% लॉस रे बिकिले जेते हेबो एता को मु 90% लॉस रे बिकिले सेते हेबो कोन पई 10 को यदि 10% लॉस रे बिकिलो ता माने तमे केते रे बिकिलो 10 * 90 / 100 90 को जदी मु 90% लॉस रे बिकिली देन केते हेबो 90 * 10 / 100 हेबो कि नहीं Yes, sir. यस सर या बुझो मु कोन कहबे चाहूजी तो जो जगह रे भी दीटा रो सम मिसिले 100 होउची जो जगह रे भी मिसिले ता माने 100 जदी हेबो तो हमें एई केसेस एक्चुअली अराइज करबो एमती न कि 10 रो 50% जहा एपटे पुनी 50 रो सॉरी 10 रो 50% जहा 90 रो 50% से न माने 10 और 90 मिसिले 100 माने 10 रो 90% बाहर करबी जा 90 रो 10% बाहर करबी से कोन भाई माने 10 को मु ताने 10% लॉस रे बिकिली 90 को 90% लॉस रे बिकिली 10 को 10% लॉस रे बिकिली माने मो पाखरे ताले 10 रो 90% रही गला आ 90 को जदी मु 10% लॉस रे बिकिली मो पाखरे ताले 90 रो 10% रही गला सो 10 रो 90% जहा 90 रो 10% भी एग्जैक्ट एक्चुअली सेम ही हला तो एई जगह रे जो कही छी by selling an article at 18.75 the numeral value of percentage loss and CP found to be equal ये जदी 75 पई जदी सैटिस्फाई कला ताले 25 पई सैटिस्फाई करिया पई बाध्य गोटे कंडीशन जदी 80 पई सैटिस्फाई कला ताले जे 20 पई सैटिस्फाई करिया पई बाध्य जदी 30 पई सैटिस्फाई कला ताले 70 पई करिया ताई बाध्य माने 30 को 30% लॉस रे बिकिले तमरो जेते टंगा एसपी हेबो 70 को 70% लॉस रे बिकिले एग्जैक्ट सेम ही हेबो तो देखो एटी जदी मोटा 75 जदी नै गली एबे 75 रु केते ताले माइनस करी 75% 75 रो 75% इक्वल टू 56.25 सो 57 काटी दो एटी 57 और 18.75 हे जाउ 18.75 एला कि नै रे Yes, sir. yeah so if A option is true then B option is also true that means the answer will be either A or B 25 रु 25% में काटी देबे सेत की ही हबो
बिकॉज 75 ରୁ 75% जदि मु लॉस रे बिकिली माने मु ताले 75 रो 25% रे बिकिली 25 रो जदि मु 25% काटिली मु तामे 25 रो 75% पाइली and both the values are correct whether you are finding 25 रो 75% or 75 रो 25% दीटा का सम 25 रो 25% काटो केते होबो एटा 6.25 और 25 रो 6.25 गले तो 18.75 so I hope everybody is getting it what I want to justify. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll move to the next one. एटा गुटे टाइप रो एक्चुअली क्वेश्चंस एटा भी एक्चुअली बहुत माने गुटे भलो टाइप रो क्वेश्चन हमें आकु भी एक्चुअली फेस एक्चुअली करबा बड़ बड़ क्वेश्चन रे तार एक्चुअली एप्लीकेशन हमें गुटे पार्ट रे एक्चुअली करबा हमें बे जहां भी पढु जे दिस इज द बिगिनिंग नो डाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन बट जेतले बड़ बड़ क्वेश्चन है फेस करबा जेतले टिके ता माने 3 लाइन 4 लाइन वाला क्वेश्चन जेतले फेस करबा दिस विल बिकम ए पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन तो नाउ यू सी एटा डिफरेंट टाइप रो books are different method different type of teacher students everybody has the unique jar method se you follow kare but what will be the best approach what I have experienced till now will be I think will be the best approach for all of you also and will follow that method. The cost price of 36 book is equal to the selling price of 30 books. आमे जनरली जदि गुड आइडिया एक्चुअली लगेबा बहुत जण अछंती अभ्यास jaar आगरो भी रहि जेथे ते टेक 100 36 टा बही रो कॉस्ट प्राइस 100 30 टा बही रो सेलिंग प्राइस भी 100 देन गोटे बही रो कॉस्ट प्राइस 100/36 सेलिंग प्राइस तापर तांको डिफरेंस नेकी प्रॉफिट बाहर करिवे तापर परसेंटेज प्रॉफिट बाहर करिवे दैट इज वन मेथड आउ जे तो एक्स भाई नै जो कोन अब हालत छाडो ता कथा हमें भाई बानी रेशियो या वेरी गुड आउ दीटा मेथड मो पाखरे अछि One रेशियो रो या ना 1 रुपी से भी कॉम्प्लेक्स है जो बिकॉज़ अगेन 1/30 दैट इज वन मेथड नो डाउट बट विल नॉट गो फॉर दैट हमें आपको जेते बेले भी एबुलिया क्वेश्चन आसीबो एबे तमे समस्त माइंड गोटे इंस सेट करिता मु जोठी अल्फाबेट यूज कली ए जो आगरु जेमति हमें गोटे जारे मु यूज करी छी सपोज आई एम टेकिंग दिस एज गोटे लाइन मेथड जोटी हमें लगे जे बिगिनिंग रे भी मु लगे थी आई थिंक ए जो हमें लगो जे एसपी बाय सीपी एसपी माने कोन तामने एरा गोटे आर्टिकल कथा देखो पढितला सो दिस इज द वन आर्टिकल एसपी तले लिखि जे मु वन आर्टिकल सीपी सो थ्रू आउट द चैप्टर जेते बेले मु एसपी लिखली जानिबो दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल जेतेले मु सीपी लिखली हमें जानिबा दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वन आर्टिकल दैट मींस हमें कोन अबे जूम करबा गोटे गोटे आर्टिकल सीपी कॉस्ट प्राइस को सीपी एंड गोटे गोटे आर्टिकल सेलिंग प्राइस को एसपी नेबे क्वेश्चन कहबा हिसाब रे 36 टार कॉस्ट प्राइस जेते माने 36 सीपी 30 टार सेलिंग प्राइस जेते आई कैन राइट 30 एसपी इट implies that in a single line you can answer this equal to 30/36 this is nothing but 5/6 टिके खाली ध्यान देतो सीपी टा ऊपर लिखि जो कि तळे लिखि जो नले भूल बस हमर अभ्यास था एमिति सो यदि 1/6 कर देली then it will be wrong that means I have to be careful when I am writing so 1/5 into 100 the gain percent is 20%. This is the best approach. This is the best approach in the work and time also. I follow the same method actually. I take A and B for the person name, but I use as the efficiency. The same case, SP and CP is no doubt cost price and the selling price. But we are assuming that as one of the rupees term. पैसा हिसाब रे हिसाब कर दोती 36 टार cost price जेते 30 टार selling price जेते. One more is that if it is a smaller value, you can tag the LCM. Then at that time actually हमें ratio रे जो technique लगे थे एठी भी same लगे देवा will assume as a number and 36 और 30 रो LCM केते हे जबरे 180 I think. So 36 टार CP जदि 180 गोटे रो CP तामने 5 30 टार SP जदि 180 गोटे SP तामने 6
That means if you are purchasing an article for ₹5 and selling it for 6, then what will be the gain percent? You will get it in the 20%. Clear samastangara? Any one of the method actually you can apply. You can go for the first also. Clear samaste? Then only we can move to the next one. Yes, sir. Yes, sir. See, the selling price of 5 article is the same as the cost price of 3 article. I can assume here is 15. Very quick. 5 SP equal to 3 CP. I can assume as 15. That means SP is 3, CP is 5. Loss ki profit? Loss. Yeah. Loss. 2 Loss. by 5 into 100. So this is 40. Ebe dekho. A person sells 8 lemons in the same price he purchased 12 lemons. 8टा लेमु को से सही रेट रे बिकुची जेति को से 12टा लेमु को दामने किनी देला. That means I can say 8 SP जेते हेबो 12 CP सेते हेबो. I can assume it as 24. So SP is equal to 3, CP is 2. That means gain is half. 50%. And that's बहुत quickly actually. बहुत quick. कलो एटा. $50. 50. Yes. Okay. Any other? So 50. Mm-hmm. Yeah, very good. Very good. देखो आमे फर्स्ट बुकिश मेथड को जीवा. Then we will apply something different method. A cloth merchant on selling 33 meters of the cloth. आमे जेमि SPCP assume करी एग्जैक्ट सेमिति ही नावा. गोटे मीटर क्लॉथ रो सेलिंग प्राइस को SP एंड गोटे मीटर क्लॉथ रो कॉस्ट प्राइस को हम CP एक्चुअली यूज करिवे. देखो गोटे जिंस आमे तले SP बाहर करूची. SP टा या तो CP प्लस प्रॉफिट हेबो और कोन होई पारे SP इक्वल टू CP प्लस लॉस होई पारे. बाकी व्हेन इट इज केते बेले तमे इजली कहि पारिबो जे तमर प्रॉफिट की लॉस हला तमे जेते मीटर किनिबो तमे सेते मीटर बिकिथिबो. तमे भाई तमे कोन करिवो ना 5 मीटर बिकिबो हमर लॉस हला कहतो कोन पई ना तमे 10 मीटर कॉस्ट प्राइस ऊपर तमे हिसाब लगतो. तो सेटा इजली पॉसिबल न. तमे 10 मीटर को जेतेरे किनुजो अब 10 मीटर को जेतेरे बिकिबो ता ऊपर तमे प्रॉफिट लॉस लगा. तमे नले पर मीटर नले हिसाब कर. देखो गोटे इंस सबले मन रखि दो. परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ द आइटम सेल ऊपर डिपेंड करेनी. तमे गोटे पेन को किनी की 5 टंका रे बिकी जदी तमे 6 टंका रे बिकी जबी तमे 20% प्रॉफिट. तमे 10 टा पेन को 50 रे किनी की 60 रे बिकिलो सेम प्रॉफिट बिकॉज़ सबुतरे तमे 10% की 20% गेन कलो 20% सबुतरे. एंड द एमटीबी रेशियो एक्चुअली 5:6 रो जहा 50:60 भी से. तो एबे मु लेखि पारिबि नि व्हिच इक्वेशन वी कैन पुट द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ वी विल गो टू द पुट द फर्स्ट इक्वेशन. जे 33 मीटर कपड़ा से बिक्री करिछि माने से 33 मीटर रो सीपी ऊपर हिसाब करिवो. 33 को केतरे किनी थो 33 सीपी रे प्लस ए प्रॉफिट रखिछि. नाउ वी कैन रिप्लेस दिस प्रॉफिट एज द 11 कोन SP बिकॉज़ सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट.
11 मीटर को बिक्री कले से जेते टंगा पाए एक्चुअली सेति की ताने तार प्रॉफिट है इट इंप्लाई दैट 33 एसपी माइनस 11 एसपी इक्वल टू 20 एसपी इक्वल टू 33 सीपी वर्तमान तम ऊपर डिपेंड कला यू कैन एज्यूम नाउ एट द 66 फ्रॉम हियर यू कैन एज्यूम आल्सो so this will be 3 this will be 2 so profit is केते 1/2 into 100 this is हमको रेशियो टा दरकार ना or you can write down SP by CP equal to 33 by 23 22 this is equal to 3/2 clear समझते Yes, sir. okay so the most important is the second approach now we are going to learn a different approach which is not arithmetic you can say not arithmetic you can say I'm just copying this first okay देखो a cloth merchant on selling 33 meters of cloth obtains a profit equal to the selling price of 11 meters of cloth समस्त को मोर केवल गोटे ही एडवाइस रहइबो प्लीज इंपोर्टेंस एक्चुअली अछि कोन ए जो एई बने क्वेश्चन दे ए जो प्रॉफिट और लॉस जो टर्म रे देइथो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट और लॉस जो टर्म रे देइछि ताकू मु एबे कोन करबी 1 रुपीज और 1 यूनिट हिसाब रे मु एज्यूम कर देबी 1 रुपीज और 1 यूनिट हिसाब रे एज्यूम करनेबी तो एथिरे कोन एक्चुअली देछि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस टर्म रे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड तो सेलिंग प्राइस टर्म रे से जे तू मते देछि मु एबे एज्यूम कर देबी जे 1 मीटर रो कपड़ा रो सेलिंग प्राइस हला 1 टंका माने मोर 33 मीटर कपड़ा रो सेलिंग प्राइस ता माने केते टंका हे गला ता 33 टंका बिकॉज़ दिस इज द 1 मीटर एसपी 1 मीटर एसपी को मैले 1 एज्यूम करली तो प्रॉफिट एठी केते टंका अछि को प्रॉफिट 11 टंका नहीं 11 मीटर ताले तमे भी भाई निजे को 33 टंका रे तमे किनी बिकिले तमर 11 टंका प्रॉफिट हला ता माने तमे केते रे ताले तमे किनी थिबो 22 रे so if now questions asks to find out the percentage I can say 11 by 22 into 100 this is 50% you can do it verbally no eta हम लेखु जे सिन हमति लागु जे हम पूरा verbally करि परिबा 11 मीटर को 11 टंका 33 को 33 रे माने 33 रे बिकिला हमर 11 प्रॉफिट ता माने मो 22 रे किनी थिली 11 by 22 into 100 like that you can do in the verbally it is the selling price रे प्रॉफिट देई जे जेतरे कॉस्ट प्राइस रे दे थाय तो आउरी इजी हे जे इन ए सिंगल लाइन बिकॉज़ एटा हमको कॉस्ट प्राइस ता बाहर करिया को पडु जे देखो नेक्स्ट नंबर तुम जानी पारिबो देखो पूरा verbally देखो करिया प्लीज जस्ट स्क्रीन रे समस्त फोकस करि था एंड जहा कहू जे सुन था मु कि लेखोनी प्लीज ट्राई टू इजीली अंडरस्टैंड हम देखो गोटे लाइन रे कर दे पारिया by selling 15 oranges a shopkeeper losses the cost price of 5 orange देखो लॉस है माने गोटे गोटे ऑरेंज रो कॉस्ट प्राइस को मु तामने टंका दे नेबी गोटे गोटे ऑरेंज को से टंका दे लेखन किनी थिला ताले पांचटा को केते रे तामने से एक्चुअली किनिबो पांचटा रो केते हो तामने 5 टंका बाकी तमे बे निजे को से तामने जेतेले से 15 टा ऑरेंज एक्चुअली से एक्चुअली बिकी छि तामने 15 टा से तामने किनी थिबो ओके सर ताले गोटे को टंका लेखन किनिले 15 टा को से तामने केते रे किनिबो 15 रे 15 टंका बाकी केते लॉस रे बिकी छि से 5 लॉस रे कोडी ताले हे कोडिए काहे हबो माने लॉस 5 हला कॉस्ट प्राइस 15 हला ताले प्रॉफिट परसेंट केते हबो लॉस परसेंट 5 by 15 into 100 हां मतलब एसपी आउ दरकार नि जमा रहबी सो दैट्स द इंपोर्टेंट हमें बे कोन कले ता माने ए जो कॉस्ट प्राइस जो देछि ता माने एक रो कॉस्ट प्राइस ता माने टंका रे दे जम करबी ताले लॉस एक्चुअली केते हबो ना 5 टा रो कॉस्ट प्राइस माने 5 आउ सीपी एक्चुअली केते हबो ता 15 टा रो सीपी ता माने 15 ही हबो 15 टंका रे तो किनी थबो ना तापरे तो बिक्री करबो ताले दिस इज इक्वल टू केते हबो 33 फुल 33% वा 1 that's the miracle of this method actually without pen and paper you can solve मो सब बेले कहे ना जोथरा में दिमाग बेसी लगेबा सेते एक्चुअली लेखिबा को कम पड़िबो लेखिले माने बेसी हेबो नो डाउट बिकॉज़ दैट यू कैन से दिस इज एन थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन हमें यदि एक्सप्लेनेशन रे बुझेबा दाले थ्योरी बोलिया हो बाकी हम एक्चुअली यदि प्रैक्टिस से सेति में एक्चुअली इंपोर्टेंट मैथ को मैं प्रैक्टिस कहंती रे
ए सब जिंस ने लिखि हेबनी स्ट्रक्चरल करी बाकी आमे जे माइंड रे रखि परिया प्रैक्टिस करी करी एटा भी देखो by selling 18 notebooks a shopkeeper losses the amount a customer pays him for 7 notebook a customer pays him for 7 notebook ता माने कोन selling price try to understand by selling 18 notebook a shopkeeper losses the amount a customer pays him for 7 notebook माने 7000 selling price ताले loss केते हेबो ता माने 7000 selling price माने 7 selling price केते हिची ता माने 18 टा को ता माने 18 रे बिकितबो ताले कॉस्ट प्राइस केते हितबो ताले रे 11 सॉरी 25 लॉस देजन या वेरी गुड 25 so what is percentage loss 7 by 25 into 100 this is equal to 28 see you see the difference actually what type of questions and what the method we are applying clear samasthanga Yes, sir. Yes, sir. one more questions is there same questions what is the difference अरे कॉपी गला ओदे मटा 5 मिनिट वेट करो तो आउ केतरा क्वेश्चन नै आसु जे कर देबा काई ये डिलीट गला कि सेटा बाप रे तीनटा कॉपी के अछि जस्ट 5 मिनिट्स वेट करो क्वेश्चन नै आसी आउ केतरा काई चलिबो तो ना बेसी लागु जी हां सर ठीक अछि Yes, sir. चलिबो तो 5टा नै आसी टाइम तो हम से भी पाइबे हमें ही पाइबा स्क्रीन आसीला था Yes, sir. Yes, हां sir. सर थैंक यू सर Yes, sir. ओके देखो देखो एबे एक्चुअली टिके डिफरेंट टाइप रो नंबर हमें आसबा सेम टाइप रो ए जो दीटा क्वेश्चन अछि सेठी कहउतला कि खाली हमको दउथला जे जने 12टा बही को बिक्री गले 5टा बही रो सेलिंग प्राइस के 5टा बही रो कॉस्ट प्राइस रो गेन की लॉस दउथला बाकी एई जगह रे बे सिचुएशन कहछि से मते प्राइस टा एक्चुअली देई दोछि तो प्राइस टा दे देला हम नो डाउट सही अप्रोच भी एक्चुअली लगे पारिया बट आई थिंक एक्चुअली ता अपेक्षा हम एक्चुअली नॉर्मली सॉल्व करले बेसी बेटर है देखो मते लागु जे बुझी पारियो 12 copies of a book were sold for 1800 thereby gaining the cost price of 3 copies try to understand actually माने से 12टा कॉपी को जेते रे बिकिला सेथिरे से तामने 3टा कॉपी रो तामने प्रॉफिट पाई गला माने केतरा कॉस्ट प्राइस रो तामने से बिकी देजी केतरा कॉस्ट प्राइस रे 15टा ये डेफिनेटली देखो केते इंटरेस्टिंग तमे 12टा कॉपी एक्चुअली किनिलो सेथिरे 3टा कॉपी रो कॉस्ट प्राइस रो प्रॉफिट मिसई देलो और बिकिलो ता माने कोन तमे दाखले 15टा रो सीपी रे तामने तमे बिकी देलो Yes, sir. तो 15टा सीपी को केते ना 1800 टका हला ताले सीपी ऑफ द बुक केते होता 120 नो आंसर बुझियला समस्तंकर Yes, sir. Yes, sir. यस सर हां सर बुझ बढ़िया हमको इक्वेशन बनेबाने बट एई केस रे देखो मु देखो पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन लिखि जी भाई खाली मोर चेंज कर देजी सेठी सीपी आ एटी मु एसपी कर देजी एबे कोन हो देखो ठीक 12टा कॉपी को जदी मु 1800 रे बिकु जी मोर 3टा रो सेलिंग प्राइस रो प्रॉफिट हो जी इंपोर्टेंट मोर ताले सेलिंग प्राइस एबे केते जे एबे 1800 तामने गोटे गोटे रो सेलिंग प्राइस तामने केते टका हबो 1800 बाय 12 या माइंड एक्चुअली क्वेश्चन आसी थाई पारे सर हमें कोन पई गोटे रो सेलिंग प्राइस हमें बाहर करू जे जोसे कि हम एई केस रे तो बाहर करि नथिले एई केस रे हम एथि पई बाहर करू जे ना एथरे गेन देजी केतेटा रो तामने 3टा रो गेन देजी तो हमें 3टा रो केमदी बाहर करिबा गोटे रो न जदी बाहर करिबा ताले 3टा रो सेलिंग प्राइस केते टका हबो तामने 300 सॉरी 450 ता माने 1800 टंका रे जदी मु बिकी छी एथरे मोर गेन हेई छी केते टका रो गेन हेई छी 450 टंका ताले एबे समस्त जानि सारिबनी कॉस्ट प्राइस ता केते हेबो 1800 माइनस 450 इक्वल टू 1350 टंका गोटे गोटे रो कॉस्ट प्राइस मते पचारी छी 1350 डिवाइडेड बाय 12 12 के 12 एला 1 12 के 12 12 गुणे 24 बुझिया लागि नै को आउ थरे मु बतो जी दीटा भीतर डिफरेंस ता कोन होई 12टा कॉपी को बिकिले एठी मोर 3टा रो कॉस्ट प्राइस मोर प्रॉफिट होची ता माने मु 15टा रो प्राइस जेते मु सेते टंगा रे एक्चुअली बिक्री कर दोची
बाकी पैसा टा कहार देथिला 1800 टा एसपी रो देछि सेति में हम एक्चुअली ताको किछि छुई पारलेनी 15 बाहर कला को बट एई केस रे तो ऑलरेडी से देछि 12 टा को 1800 टंका रे बिक्री कले मोर 3टा रो सेलिंग प्राइस रो प्रॉफिट हला ता माने 12 टा को जदी हम 1800 रे बिकिले 3टा रो केते हो 4 भाग रो भागे भी तम कर दे पारिबो दैट इज 450 टंका माने 1800 रे बिकिले मोर 450 गेन हला जदी मु ताले 1350 तमे किनी जे भाई गोटे गोटे रो सीपी पचारिला तामने मु 1350 बाय 12 कर दे पारि क्लियर एटा समझते Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes. या जदी प्रॉफिट न देकी मते लॉस जदी दउजी देखिलो 15 pens were sold for 300 thereby losing the cost price of 5 pen माने मु ताले केतेटा पेन रो पैसा पाइकी मु तामने दे दीजी मोर 15 टा जाक पेन दस 10 टा या वेरी गुड 10 टा पेन रो ताले 10 टा पेन रो कॉस्ट प्राइस हला तामने 300 टंका गोटे रो पेन रो कॉस्ट प्राइस हला 30 टंका दैट्स ऑल अबाउट बिकॉज़ मु 15 टा किनी जे बाकी मु 300 5 टा रो लॉस अछि माने मु तामने 10 टा रो प्राइस रे देई सेम केस जदी सेलिंग प्राइस आकार दे देला सेम क्वेश्चन मु करी जी खाली सेलिंग प्राइस कर देई 15 टा रो सेलिंग प्राइस जदी 300 हे जे 5 टा रो सेलिंग प्राइस तामने केते हेबो 100 1/3 एक्चुअली हे जो 100 टंका बाकी मोर एबे दरकार जे मते सीपी एक्चुअली दरकार केतेटा रो सब जागर सीपी दरकार ताले 15 टा पेन को जेतेले मु 300 टंका रे मु बिकी जे मोर तामने 100 एक्चुअली लॉस हे जे ताले मु केते रे किनथिली 15 टा पेन को 200 रे सॉरी के पालिया धदलडा 400 ना प्रीति चार हां 400 so that 400. will be CP will be equal to 400 by 15 equal to 80 पंजा 3 पंजा that is equal to 23 29 23.3 बुझियला तो Yes, sir. ओके नहीं कि हम टिके खाली यूटिलिटी माने टिके कोसो सेवा एसपी की सीपी दो 26 points. 23 3 29 26 3 78 66 हे जो काटी दो मन से लिखियो 26.66 माने 67 बुझियला तो ए टाइप रो क्वेश्चन केतले डायरेक्ट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस मागी पारियो केतले एमदी वैल्यू देथो जोटा देले भी हम ओरिड आवर किछि भी नै वैल्यू देले ता वैल्यू को यूज करिया वैल्यू न देले हम टंका दे यूज करिया एबे देखो एटा भी गोटे टाइप रो क्वेश्चन some articles were bought at rupees 6 for 5 and sold for 5 for 6 क्वेश्चन कहि जे किछिटा आर्टिकल हमें 6 टा को 5 टंका लेखन किनी की 5 टा को 6 टंका लेखन बिकिले देखो मु टिके आगरु जस्ट कहितली हमें जदी 10 मीटर से गोटे कपड़ा किनु जे हम सेते बेले की हमर प्रॉफिट किमा लॉस हला कहि परिबा जेतेले हम टोटल कपड़ा कोइतला बिक्री करिबा किमा जदी मु 50 केजी ओपर ग्रोसरी सामान किनी मो दुकान रे रखी जी एंड मु टोटल सेलिंग करिनी 30 केजी बिक्री करी मोर लॉस हला कहि दैट इट इज नॉट पॉसिबल हमें सेते बेले ही केवल प्रॉफिट लॉस बाहर करिबा जेतेले हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स और द क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स दैट वी आर सोल्ड सेलिंग प्राइस साइड रे कॉस्ट प्राइस साइड रे दैट मींस दैट शुड बी इक्वल तो ए जो सम आर्टिकल्स जो दे जे सम आर्टिकल्स हमें किछिटा आर्टिकल किनिले 6 टा को 5 टंका लेखन बिक्री कला को हमें कोन कले 5 टा को 6 टंका लेखन बिक्री कले गेन परसेंट केते हेबो तो ए सम टा हमको डिसाइड करिया को पड़िबो हमें जेतेटा किनिबा हमें ताले सेतेटा एक्चुअली बिक्री करिवार अछि दैट मींस तमे निजे को गोटे जगह रे ता माने 6 एमती से जो माने बांधी की रखाई लेंबू देखि जो कि नि माने केमनी गदा है कि रखी तांदी रखी ना माने गोटे ग्रुप को एतकी टंका 5 टंका 6 टंका 10 टंका एमती सब बनाई साग नहले जेमती करंदी एग्जैक्ट सेमती एबे एग्जैक्ट एरा सेमती देखो माने कर 6 टिकिया पैकेट माने अछि हमें किनिबा ताको 5 टंका लेखे हमें कोन करिया ताको li भांगे की मुनी 5 टंका पैकेट माने बनै देबा ताले मु जदी केतेटा जदी मिनिमम जदी किनिली ताले मोर आ बळीबनी ठीक रहिबो 6 टा लेखन किनि के एपटे केते पैकेट किनिबी एपटे 5 टा लेखन किनि मु केते पैकेट किनिबी तो ठीक केते पैकेट बनेबी ताने ठीक बैलेंस के रहिबो 30 टा या बादे की बिकॉज़ 6 टा किनिबी पुनी 5 टा को बनेबार अछि या वेरी गुड ताले नंबर टा ताले मुनी 30 टा तामनेली किनिबी 30 टा किनिबी तमे बे निजे को 6 टा रो कॉस्ट प्राइस 30 टा एग्जाम करिवा
अलगा फॉर्मेट लिखियो एबे 6टा को मु केते लेखन किनुतिली 5 टंका लेखन 5टा को बिक्री करि जे मु 6 टंका लेखन ताले देखो एबे केते होबो तामने एता को 5 गुण बढ़ेले कि 30 हेबो ताले 6टा को जदी एते लेखन 5टा को ताने 5 5 केते बडा 25 टंका पड़िबो मते आ बिक्री कलाल को मु केते रे बिक्री करबी तामने 36 रे ताले केते टंका रो गेन हला एबे 11 टंका रो परसेंटेज प्रॉफिट जदी नेबी ताले 11/25 into 100 this is equal to केते परसेंट होता ना 44 but the best method is yet to come आहुरी भलो मेथड एक्चुअली अछि आमे मूलरु ही कोन सिखिले जे whenever we are finding out the profit and loss we need the ratio of the CP and SP हमको रेशियो दरकार मु तुमको प्रूफ करी कि देखेबी डिस्काउंट रे एते बड़ बड़ क्वेश्चन माने अछि हमें लास्ट को करबा जे मिसलेनियस करबा मु एई गोटे ही कांसेप्ट नहीं एसपी आ सीपी रो केवल रेशियो ही बाहर करी तुमको बाहर कर देबे जो जगह के पिला माने कि पूरा ट्रेडिशनली करन दे तो आमे से रेशियो को सबले जदी को जगह रेशियो पॉसिबल न हो मझे किछि डाटा तमने एलिमिनेट हे जाउची देन दैट इज अ समथिंग डिफरेंट मेथड दैट यू कैन अप्लाई but in the 99% questions actually only the ratio is required to find out the percentage profit or percentage loss the same technique I am applying here what will be the ratio of CP and SP भाई निजे को मु यदि 6टा को 5 टंका लेखन जदी किनु जे मु गोटे किनिकरी गोटे बिकिले मोर कोन प्रॉब्लम अछि कि किछि नो so what will be the ratio of one that will be 5:6 and the same way what will be sold at 5 for 6 that will be equal to 6/5 बुझियला 6टा को जदी 5 रे किनलो गोटे गोटे रो कॉस्ट प्राइस सामने केतेला ताने 5/6 एंड 5टा को 6 रे बिकिले गोटे रो एससी प्लस 6/5 भाई 30 मल्टीप्लाई कर दियो सो दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 36 सेमती भी दुईटा रे खाली क्रॉस कर देले भी चलिबो डिनोमिनेटर हटेगी तो 25:36 हला माने प्रॉफिट जणा पड़ी जे 11/25 * 100 दिस इज 44% क्लियर समस्तंगर Yes. ओके इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप में आपको बड़ी बड़ी जीवा नो डाउट कि बड़ी बड़ी जीवो क्वेश्चन लेंदीटा बाकी कांसेप्ट एक्चुअली से मु गोटे दिटा करू छी गोटे दिटा तमे रखि छी देखो I would have purchased 10 articles for 11 and sold all the articles at 11 for 10 either हमें कोन करिया 110 एज्यूम करिवा नहले हमें एक्चुअली सीपी आ एसपी रा हमने रेशियो बाहर करिवे सॉरी सो 10 टा आर्टिकल जदी मु 11 रे किनिली गोटे आर्टिकल मते ताले 11/10 लेखन पड़िला 11 टा आर्टिकल जदी मु 10 रे बिकिली मु ताले 10/11 लेखन बिकिली 110 जदी हमें बे इनटू करिवा दिस इज 121 and this is 100 if you see then what is the gain portion this will be 21 divided by 121 loss evo into 100 so this is equal to हमें approximate नहीं जावा 2100/121 equal to and this is 1 2 जीवन एटा एक गला पर 121 और रही जोटा 79 and this is 10 89 this is 9 890 no 890 माने एटा 7 पड़ेबो 7 पड़ेले 17 point 7 पड़ेले एक्चुअली 847 माने 53 बळी जबो 53 की सॉरी 43 बळी जबो बोले 90 इतला ना 43/120 वो approximately 17 point something कर दबा बुझियला तो Yes, sir. ओके देखो a person purchased some articles at 10 for ₹30 and same number of articles at 12 for ₹25 if he sells all of them at ₹1 each his gain percent loss करते देखो मु दीटा को मेथड करू छी किछिटा आर्टिकल से 30 टंका रे 10 टा लेखन किनी छी आउ किछिटा ता माने 25 टंका रे 12 टा लेखन से किनिला
सेम नंबर कहि जी एटा इंपोर्टेंट सेम न देला माने क्वेश्चन रे से नले मते मेंशन करिवो या तो को रेशियो रे किनि जो नले केते टा लेखन किनि जो तो सेम नंबर कहि जी माने आमे कोन करिवा ताले 10 टिकिया पैकेट बनि जे 12 टंकिया पैकेट बनि जे ता माने केते टा नै जीवा ताले मिनिमम बोथ रु 60 टा लेखन LCM of 10 and 12 so we can check now LCM of 10 and 12 this is 60 ताले मु फर्स्ट रु भी 60 टा किनिबी सेकंड रु भी 60 टा कंडीशन 10 टा एठी 30 टंका लेखन थिला एठी 12 टा को केते लेखन थिला 25 टंका लेखन 60 टा किनले ये केते पैकेट किनिबो रे 6 पैकेट को तुमको पड़िबो केते ना 180 एथरु किनिलो 5 पैकेट एटा पड़ला केते ना 125 टंका केते टा आर्टिकल किनिली जे को हेलो 120 टा दुईटा या 10 टा थ्रू आमे 60 60 किनिले 120 टा तो रेट एक्चुअली केते टंका हला ना 300 एक्चुअली 5 टंका हे गला क्वेश्चन कहबा हिसाब रे कोन ठीक लिखले तो 5 के 5 8 10 या 305 क्वेश्चन बाकी कोन कहजी देखो इफ ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट ₹1 ईच बिकिलाल को मु कोन कहलिबा कि सब जगह टंका लेखन एक्चुअली बिकी देले भाई किनिलाल को तो बहुत ही रेट एटा गोटे को टंका लेखन देई जे ओके नो प्रॉब्लम 2 लेखन ले देई थांदा अरे 10 टा को 30 किन जे माने गोटे को 3 लेखन किनिलानी 12 को 25 माने गोटे को 2 पॉइंट समथिंग हेलानी बिकिलाल को टंका टे बिकी जा ओके नो डाउट खाली लॉस इन लॉस एका ताले 120 को जदी हमें 1 लेखन बिकेबा ताले मोर एसपी केते न हबा ताले 120 जोटी सीपी मोर केते थिला ताने 305 रेशियो बाहर कर देले बाहर कर दे पारिबा दिस विल 5 रे कटि गले एक्चुअली दिस इज 61 एंड दिस इक्वल टू 24 सो परसेंटेज लॉस इक्वल टू माने केते बडा 37 देखो ये बहुत जन का माइंड रे कोन हो सर गेन भी लिखाई जे एटा माने गेन और लॉस को माने क्वेश्चन कहबा हिसाब रे यदि गेन हो ताले गेन बाहर करो लॉस हले लॉस बाहर करो सो दिस विल बी 37 by 61 into 100 दिस इज 3700 by 61 इक्वल टू 6 को 36 366 4 60 40 पूर्ण 61% अब 60 पॉइंट समथिंग देखो कोन कहूची मु जो मेथड एबे कहउतली हमें गोटे रो भी नेले भी हमर चलियो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बाकी रेशियो मु काहर बाहर करबी कहली एसपीसी बेटा अभ्यास करी आगे रहली बहुत काम रे एक्चुअली आसे मु कोन कहितली ना हमें जेतेटा किनिबा हमको सेतेटा बिकिबा को पड़ियो क्वेश्चन कहबा हिसाब रे दुही तुर त हमने समान नंबर किनिबा हमें केते कोन एज्यूम करूजु हमें दुही तुर गोटे गोटे किनिबा अच्छा गोटे गोटे किनिले एतार गोटे गोटे कॉस्ट प्राइस केते पड़िबो 3 टंका लेखन 30 बाय 10 ताले मु फर्स्ट थ्रू गोटे किनिले 30 बाय 10 रे सेकंड थ्रू एबे गोटे किनिबी केते रे 25 बाय 12 रे सेकंड थ्रू भी मु गोटे किनिली 25 बाय 12 रे ताले मु केतेटा आर्टिकल एटा किनिली दुईटा या मु दुईटा इली किनिली बाकी मु गोटे गोटे को इली टंका लेखन बिकुची काई गला कि एटा गोटे को टंका लेखन बिकिचो ता माने ऊपरे या तो 2 लिखिबो नहले एठी नहले गुडा हाफ टे नहले इनटू करिवो बिकॉज़ आमे जो लेखु जे जो सीपी जो एटा केतेटा आर्टिकल सीपी एटा दुईटा आर्टिकल या तो ऊपरे दुईटे नहले इनटू कर दे बिकॉज़ दुईटा रो एक्चुअली एसपी हमें पाई जीवा जदी एपटे 2 इनटू गले एठी ताले हाफ और न करले भी चलियो आ सीपी जदी मु एपटे दुईटा रो लेखिली ताले हमें हाफ करी के मते दामे गोटे रो लेखिबा को पड़ियो आको हमें करबा सही समय समस्तकर बुझी हला मु जा आशा तापस समय तमरो बुझी हला क्लियर सर बुझियला ओके 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 ताले हमें आको बढ़िया समस्तकर क्लियर तो हाफ हमें कम पे इनटू करले बिकॉज़ वी आर Yes, sir. फाइंडिंग आउट द सीपी ऑफ 1 या एबे देखो ये एबे 10 एबे ये 30 हे जेबो तो वेरी सिंपल देखो गोटे स्टेप रे हमें करबा ए दुईटा आसी देले इनटू हो बैठी जली एलसीएम रे ता माने 24 हे जेबो देखो एटा केते देखो 12 30 36 प्लस 25 61 ये एक्चुअली केते जाने 61 बाय 24 हेबो उल्टी जो जेते एक्चुअली 24 बाय 61 हमें एमती पूरा स्टेप उठे दावा
once again I am telling, just otherwise I am writing one step just 61 by 12 into half बुझी जीवा बेटी 12 दुगुना 24 24 जगह उल्टी की 24 by 61 हम सी एठी हम केते सॉल्व कला परे की 24 61 पाइथिले एठी हम फर्स्ट लाइन ही पाइ जेबा that means we are trying to write down the last line. That's the shortcut only. So this is 64 and 21. Again the 37 will come. Percentage will be 37 by 61 into 100. This is 60 full. Kete 40 by 61 asla bodhe. Yeah. बुझिएला समस्तंकर. Yes, sir. सर जो हिस्से वो हाफ बोले हाफ सर क्या उत्तर कभी देखो हाफ टा हमें कोन पई कोले देखो आमे दुईटा आर्टिकल किनिले गोटे को हला 10 टा को 30 टंका लेखन दउथले सेथिरो गोटे किनले 30 बाय 10 टंका देगी आउ गोटे रो रेट थिला 12 टंका रे 25 टा लेखन सेथिरो आमे गोटे किनिले 25 बाय 12 देगी तो मो सेलिंग प्राइस गोटे गोटे को केते देबे कुजी एक रे तो ऊपरे जदी मु गोटे गोटे रो सेलिंग प्राइस जदी लेखुजी मु ताले तळे ताले मते गोटे रो ही कॉस्ट प्राइस दरकार माने मु दुईटा को ताले हेतकी लेखन देले गोटे को मते एवरेज केते लेखन पड़िबो इनटू हाफ को लगी जणा पड़ी जो ओके हाँ सर तो नहले ऊपरे तमे दुई नहले लेखो बिकॉज़ ऊपरे गोटे रो हम एसपी लेखुजी तो ऊपरे नहले दुईटा रो एसपी लेखो हमें तळे ही सबले इजिली हाफ करबा आको इजिली जहां भी क्वेश्चन आसे मु सेते मूल रो ही तळे लेखि अभ्यास करे दोई क्लियर एतकी तो समस्तंकर हाँ सर बुझे Sir. ओके सो बाकी तीनटा क्वेश्चन रहिला 33 34 एंड 35 ए तीनटा नंबर तम पई रहिला ना करिवो नेक्स्ट क्लास में आको आरी बढ़िबा